Yes, dear friends, good evening. 6 o'clock, and we will start. Even though there are less number of students, okay, we'll continue, we'll start. Can't wait for the others, they will join in. So let's start. So good evening, and let me start. Okay. Last lecture we was talking about a bill. Now dear student, this bill doesn't mean the bill which you get in the shop. This bill, when we say bill here, this bill is equal to bills of exchange. When we say bill का मतलब क्या होता है? Bills of exchange. Rida, good evening. Okay. So whenever the question says bill means bills of exchange. Clear that first point? Bills of exchange, BOE, bills of exchange. This topic is there. This topic, yeah, Radhika, good evening. This topic is there in your BK also, bookkeeping also. Your topic called as bills of exchange. There you will learn more about it. Here we are learning it mathematically. When bills of exchange comes into picture, let's say there is a buyer who is buying something from the seller. When buyer buys something from the seller, goods goes to the seller. Agreed? Sorry, buyer. Goods goes from the seller to the buyer, and from buyer, cash goes to seller. Agreed? आपने कुछ बाय किया, बायर ने बाय किया, किसके पास से? सेलर के पास से. तो क्या गया सेलर के पास से? बायर के पास गुड्स गया, और बायर सेलर को क्या देगा? कैश देगा. Nowadays there is no barter system. पहला बार्टर सिस्टम था, तो एक्सचेंज में और कुछ जाता था, इधर कैश गया. इज इट क्लियर? बायर बॉट गुड्स फ्रॉम द सेलर. गुड्स कहां से कहां गया? गुड्स गया सेलर के पास से बायर के पास, और बायर के पास से सेलर के पास क्या गया? कैश. क्या अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा? आंसर इज नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नो bills of exchange, no BOE, no bills of exchange. Why there is no bills of exchange? Because the transaction is done on cash. कैश पे किया ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आएगा? if क्रेडिट पे परचेस कर रहे, क्रेडिट पे लेते हैं तो let's take another example here. Buyer and seller. Buyer bought goods from the seller. Goods goes from the seller to the buyer, but buyer is buying it on credit, not cash. Now BOE will come in picture. Now you can have a case of bills of exchange. Okay. Who will prepare? Credit seller. Who will prepare bills of exchange? Bills of exchange is prepared by seller. Seller prepares it, and buyer will accept it. Buyer will accept. That is, he will sign on that. Yes, I have to pay you. I have to pay you. Now think of this goods is of rupees 1,000. He purchased here. Let's set the transaction. If it is on cash, goods of 1,000 goes from the seller to the buyer, and cash of 1,000 goes from the buyer to the seller. Now in this case, goods of 1,000 के goods कहां से कहां गए? सेलर के पास से बायर के पास. बट क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट हो गया? क्रेडिट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,000 का बनेगा या मोर देन 1,000 का बनेगा? Bills of exchange will be of 1,000, more than 1,000, less than 1,000. Just say E for equal, M for more, L for less. E for equal, M for greater than more, and L for less than.
More. Why? Why more? Bills of exchange will be more than 1,000. Why? What is the reason? Reason why it is more than 1,000. Let's say bills of exchange is of 1,100. Let's assume that. Why this 100 more? It is interest. 100 more is interest. It is interest. And that interest is called as, that interest in mathematics, it is called as what? True discount. What it is called as? True discount. Interest. Actually, true discount is nothing else but it is interest. Okay? Interest for credit period. Now let's say credit. Credit मतलब उधारी लिया है, बराबर है? Sometime you have to pay credit of, let us say 4 months. Credit का period कितना है? 4 months. Let's assume that 4 months. So buyer has to pay to the seller after 4 months. But how much he has to pay? 1,100. So that 100 is interest. Interest for 4 months. Clear? Clear, dear student? Now tell me, who is preparing a bill? क्या बोला मैंने? Who prepares a bill? Bill is prepared by. Bill बनाएगा कौन? Seller. उसको accept कौन करेगा? Bill is accepted by buyer. The one who writes the bill is called as drawer. अभी आएगा concept. Drawer is a person who draws the bill, writes the bill. Is called as a drawer. Who will be? He will be a seller. We'll see an example also. Example भी आगे देखते हैं. Okay. So seller is called as a drawer. Yes, seller is a drawer. Drawer is a seller. Seller is a drawer. Any way you can say the sentence. Okay. Drawer is a seller, or you can say the other way around. Seller is a drawer. Always, no exception. Always a seller is a drawer. And who is drawing them? The one who accepts it, that is the buyer. The person on whom the bill is drawn is called as drawee, buyer. He accepts the bill. So buyer is always drawee and seller is always a drawer. Next, date of bill. We'll have to prepare a bill on a particular date. The date on the bill is called as date of bill. Even the bill will have credit period. Period of the bill, 3 months, 4 months, that will be mentioned. Period of the bill is a time after completion of which drawer receives the payment. Who will receive the payment? Definitely, buyer will make the payment and drawee, that is seller, will receive the payment. Okay. तो क्या क्या होगा उस बिल पे? बिल पे होगा डेट. फर्स्ट थिंग इज द डेट, दैट इज ड्रॉवर एंड ड्रॉई. सेकेंड, पीरियड ऑफ द बिल. अमाउंट भी लिखा होगा उसके अंदर अमाउंट भी लिखा होगा, आगे आएगा. ओके. नेक्स्ट, नॉमिनल ड्यू डेट. लेट्स से द बिल इज ड्रॉन, डेट ऑफ बिल, लेट्स अज्यूम टुडेज डेट 3rd July 2021, and the credit period of the bill is 4 months. Once you know both the things, what is the date of the bill? We are assuming date of the bill, आज का डेट ले लेते हैं, today's date 3rd July 2021, and the credit period, the period of the bill is 4 months. So what will be the date after 4 months? 4 महीने के बाद क्या तारीख आएगी? July, August is 1 month, September, October, November. So 3rd November. So 3rd November will be called what? Nominal due date. So what is nominal due date? 3rd November, a date after the credit period. 3rd November 2021. Suppose dear student, this credit period instead of 4 months, let's assume it is 2 months. Then what? Still the date will remain the same, nominal due date. Bill date is 3rd July, but period of the bill, I am saying assume it to be 2 months. 2 months है तो क्या हो जाएगा? July to August 1 month, August to September 3rd September. So this date, nominal due date, will change upon bill of date, or it will depend upon date of bill and period of the bill. क्या बोला देखो? The date on which
on which the period of the bill expires is called as nominal due date. क्या बोला था? Nominal due date. नो रीना, डेट ए तारीख होती है, वैल्यू रुपीज में आएगा, वैल्यू विल बी इन रुपीज, वैल्यू विल बी इन रुपीज. वैल्यू की अभी तक बात नहीं की मैंने रीना. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, सब एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगा. रुको. सो डेट ए तारीख होती है, वैल्यू फेस वैल्यू विल बी रुपीज. आएगा भर सकते, आएगा, सब डिस्कस करते हैं. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी सब डिस्कस करते हैं, सब डिस्कस करते हैं. ओके गौरी, विल डिस्कस एवरीथिंग. जस्ट वेट. पहले नॉर्मल टर्म समझ लेना. नेक्स्ट है लीगल ड्यू डेट. व्हाट इज लीगल ड्यू डेट? अ बायर इज अलाउड टू पे द अमाउंट इवन 3 days लेटर. ग्रेस पीरियड मिलता है 3 days का. ऑलवेज दिस इज फिक्स्ड. यू कांट चेंज द ग्रेस पीरियड. ग्रेस पीरियड कितना होता है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है. 3 days ग्रेस पीरियड. दिस 3 days आर कॉल्ड एज days of grace, and the date obtained after adding 3 days grace date to nominal due date is known as legal due date. अपना nominal due date क्या आ गया दोस्तों इस एग्जांपल में? What is nominal due date? In this example, what is nominal due date? लिखा है मैंने. तो 3rd नवंबर में और 3 ऐड करो. 3rd नवंबर में और 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? इफ यू ऐड 3 टू दैट, 6 नवंबर. तो 6 नवंबर 2021. सर कैन ग्रेस पीरियड बी 2 days? नहीं हो सकता है. कैन ग्रेस पीरियड बी 4 days? नो. ग्रेस पीरियड इज ऑलवेज विल बी 3 days. Credit period can be 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. But grace period will be always 3 days. कम नहीं, ज्यादा भी नहीं, 4 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, always 3 days. Okay? So, what is the difference between the legal due date and nominal due date? Always the difference between these two will be 3 days. So, if you know legal due date, you know nominal due date. Or if you know nominal due date, you know legal due date also. सपोज क्वेश्चन में आपको दे दिया लीगल ड्यू डेट इज 6 नवंबर. लीगल ड्यू डेट इज 6 नवंबर. देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट विल बी थर्ड नवंबर. या आपको नॉमिनल ड्यू डेट दे दिया तो ऑटोमेटिकली आपको लीगल ड्यू डेट भी मालूम पड़ जाएगा. सो ईदर ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड. ओके, तो थर्ड पॉइंट इज नॉमिनल ड्यू डेट and fourth point is legal due date, but we don't require both. Nominal दे दो, हम लोग आपको legal due date बता देंगे. या उल्टा, you give us legal due date, we'll tell you what is nominal due date. Okay? समझा क्या? Not yes, sir. Assume there is one bill which is having legal due date of today, 3rd July 2021 is LDD, that is legal due date. Therefore, nominal due date will be, अगर एक बिल है मेरे पास उसका लीगल ड्यू डेट 3rd जुलाई है तो उसका नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 3 दिन पीछे जाओ, 1 दिन पीछे जाएंगे तो 2nd जुलाई,
2 दिन पीछे जाएंगे तो 1 जुलाई, और एक दिन पीछे जाओ 30 जून। क्लियर दोस्तों? तो difference between legal due date and nominal due date is always how many days? 3 days. Can I make it 4 days? No. Can I make it 2 days? No. I can't increase it, I can't decrease it also. बढ़ा भी नहीं सकता हूं मैं grace days को. Grace days जो है, grace days always 3 days. Okay? Next. अब आता है face value. Somebody was asking me face value. Rina, I suppose. Rina, face value अब आ रहा है, face value. The amount for which the bill is drawn is called as face value. Amount. तो सर क्या आपने कभी कोई चेक देखा है? कोई चेक देखा है क्या? चेक, एनी चेक यू हैव सीन? देखा तो है ना चेक? ओके, सपोज दिस इज अ चेक. You must be knowing क्रॉस चेक भी होता है, तो इधर क्रॉस करके रखा है, ऑल दैट्स इधर लिखा है मैंने. सपोज हियर 05062021. सो व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा मैंने? व्हाट इज दिस? 05062021. व्हाट इज दिस? डेट. बेसिकली चेक पे, तो व्हाट विल से चेक डेट. चेक की डेट हो गई वो. ओके ना, वो चेक पे किसको देना है वो सब नाम भी आएगा उधर. और इधर एक बॉक्स नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बॉक्स होता है साइन के ऊपर. इसमें अगर लिखा है 50,000, डेफिनेटली 50,000. इधर वर्ड में भी लिखा होगा 50,000 ओनली. सॉरी, 50,000 ओनली. 50,000 ओनली. सो व्हाट इज दिस? 50,000 अमाउंट हो गया. ये अमाउंट बराबर है. वैसे ही बिल पे भी अमाउंट होगी, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फेस वैल्यू. दिस इज फेस वैल्यू ऑफ द चेक. चेक इज ऑफ 50,000. सो फेस वैल्यू, अमाउंट. डेट अलग होती है, अमाउंट अलग होती है, रुपीज में होगा. ओके चलो. सो द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, ओके, ऑफ द बिल, एंड इट इज द सम ड्यू. फेस वैल्यू का दूसरा नाम है सम ड्यू, या सम ड्यू का दूसरा नाम है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज सम ड्यू. सम ड्यू को ही फेस वैल्यू भी बोला जाता है. ओके, विल कम अक्रॉस दैट. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. दिस इज टेकन फ्रॉम योर बुक कीपिंग टेक्स्ट बुक. आपके बुक कीपिंग में से लिया हुआ है. ओके, इट्स नॉट देयर इन योर मैथ्स बुक. टेकन फ्रॉम, कहां से ले आए? 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग. दिस इज कॉल्ड एज, देखो इधर क्या लिखा है हेडिंग में. हेडिंग में क्या लिखा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, हेलो, bills of exchange. I'll prepare this bills of exchange, but before that, let me take it this. Bob is B for buyer, so मैं उसका नाम Bob देता हूं. Bob purchased something from Suresh. Suresh is seller. S उधर से इसलिए seller नाम दिया. And Bob is who? Buyer. Hello. Bob is buyer and Suresh is seller. Okay, so Suresh is from Dadar and Bob is from Vasai. Okay, and Bob purchased goods of rupees 10,000. कितने का किया? 10,000. Okay, so now and on credit bills of exchange बनेगा. कितने का बनेगा? गुड्स का बॉट किया है 10,000 को, तो बिल क्या 10,000 का बनेगा क्या? कि ज्यादा बनेगा बिल? बिल 10,000 का बनेगा, 10,000 से ज्यादा बनेगा, मोर ना. लेट अस अज्यूम इंटरेस्ट इज 100. तो कितना बनेगा? 10,100 का बिल बनेगा. ओके, रिमेंबर दिस डेटा. नाउ लेट्स गो हियर.
नाउ क्या बनेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, हियर यू पुट अ स्टैम्प. हियर यू राइट ड्रॉवर्स नेम. नाउ ड्रॉवर मतलब हूं, कौन ड्रॉवर था उधर? बॉब एंड सुरेश. बॉब इज बायर एंड सुरेश इज सेलर. तो सुरेश, तो इधर उसका नाम आएगा, ड्रॉवर नेम सुरेश, वॉट एवर इज सरनेम ऑल्सो. ओके, लेट्स से सुरेश जैन. सुरेश जैन ड्रॉवर हो गया. देन ड्रॉवर एड्रेस. ड्रॉवर इज फ्रॉम, कहां से बोला था मैंने? सुरेश इज फ्रॉम दादर. सो दादर, उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा. मैं इधर सिर्फ दादर लिखता हूं, सॉरी, दादर. सुरेश इज फ्रॉम दादर. हियर आई एम जस्ट राइटिंग दादर. सुरेश जैन, then Dadar. Then date of the bill. Say date of bill drawn. इधर डेट आ जाएगा. आज का ही लेते हैं. तो what is today's date? 3rd July 2021. हो गया डेट. अब आते हैं अमाउंट इन फिगर. बिल कितने का बनेगा? गुड्स 10,000 का लिया है, 100 रुपये इंटरेस्ट, तो 10,100. ओके, नाउ इधर आएगा क्रेडिट पीरियड. लेट्स से द क्रेडिट इज गिवन फॉर 4 months. तो इधर लिखेंगे 4 months आफ्टर द डेट. व्हाट इज द डेट? 3rd July 2021. ये क्या हो गया? डेट ऑफ बिल. समझ में आता है क्या? ये डेट ऑफ बिल हो गया. 10,100 इज अमाउंट. पे मिस्टर और मिस. किसको? मिस्टर. किसको पे करना है? Who is going to receive? Who is going to receive? सुरेश. इधर आएगा 4 months आफ्टर द डेट. पे मिस्टर सुरेश जैन. पे सुरेश जैन, ये नाम सेम हो गए. ड्रॉवर सेम नेम, दैट इज ड्रॉवर. सुरेश इज अ ड्रॉवर. ओके, सेम रहेगा. सुरेश जैन और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ